Hello. Evening. What is he sensing? Then volume का copy करो. Sinam. हाँ geography. हाँ एक ही रहेगा. Then a big dilemma and tension. और पानी का bottle. So today you want which tenth? No, my portion is completed. Completed. Not only in one branch, more than 2 branches. Good. And 9 chapters are there. वो भी करेंगे. 6, yes. Yeah, because सबसे आगे your books are very active. All the classes. If I instruct you guys, how many benches are occupied here? 2. And look at the lights. Look at the lights. How many are sitting in that corner bench? Some 4 groups. 4, 5. Oh my God! I feel 10 and 15. But I don't think they require any lights. Always switch off the lights. Consumption of energy. He's saying 4, 5 students are there. Oh, this part is out. Conjuring part is out now. You say the failures of the last year. But don't laugh. I remember teaching in the same class now. Up till that second last week, both the rows will be filled with students. I have taken the students. यहाँ से वहां तक पूरा batches पर. Because for science and maths, they will divide batch 1 and batch 2. But for our side, all combined. Because not only here, Nehru now also good spread. How much? 9th ICSE, I think we have close to 10 or 15 students. Yeah, hardly 4 and coming only 2. You are 10th students. Tell me that chapter name. Which chapter? Hydrosphere have completed? Yes. Last lecture you were absent. Yes. Right? Hydrosphere pehle hogi. But why you were absent? I was absent because I had to go for Ganesh. So Ganesh has given liberty everyone. Everywhere Ganesh. I should go and put a WhatsApp to him. Even I myself took to a place. अब क्या करे ना? I took 3, 4. Oh my God! That's 2 फ्लोर में हम भी हाथ धो लेंगे. क्योंकि यार गणेश में स्किल है. हाँ, करने की नहीं था. But बेचारा लॉर्ड गणेश को लेकर सारा तस्वीर में पब्लिक मेरे नाम से Muslims and Christians also. क्यों? अरे we are secular people. चलिए. Volume 2. हाँ, now look here, hydrosphere we have done, but you remember we were doing what is that? Cold current and warm current. आज अभी 2 lecture. I will start a new chapter with this lecture. Isolation. Isolation नहीं है. Composition है. Then that last partner which is left when this cold and hot current. Warm and cold current. Hot current. You'll change the entire hot current. So composition of atmosphere we will start. So then let's see what do you call it? Let us have a very in-depth lecture because only 2 and I'm only 1. Where are the other 2? Sleeping. They are bed 2 deep. 2 deep, is it? How deep? 10 meters or 15 meters? Around 2 meters. You only pushed them up there. And why did you come up? Because I had to take them. Common sense का कर रहा है. You are totally deep. But this smart enough. 11, 12 जाने से पहले थोड़ा सा शातिर बन जाए. लगते हैं पकड़ पकड़. Guys, it's okay. It's okay. Funny guy, but इतना भी funny नहीं है ना? Hey, there is one chapter called insolation. Is it not isolation? Hey, insolation. Insolation. Yes. New geography I am studying. देखो, now when you take, अभी एक काम करते हैं. This chapter, let us have not too many diagrams, but this diagram we will start with.
Very important. I took a new before. Yes. Oh, very good. This diagram we will draw and we'll start from there. Because that is the basic. I will also draw with you. So, introduction. Then we have meaning. Meaning. इसके साथ he likes to lecture like this. It's okay, it's part of life. I did not want to skip your lecture, but it was in the second one. You should get a change now. Maybe after 2 lectures you feel there's one beautiful madam coming. Hey! है ना? अरे boring हो गया चल रहा नया कोई आई है. Then you will never miss the lectures. I understand. क्या बोलते हैं? मन का वो है सर. क्या है? चंद्रमुख. ठीक वो थोड़ी चंद्रमुखा. चलो चलो जल्दी करो. I have completed drawing the diagram also. Propose here. देखो except 1 and 2 lights and maybe 1 fan. These things they will do it, but you are a responsible citizen of India. Are you? Then you should switch off all these lights. You save electricity. Next time हम अंधेरे में मत बैठो. Last night. क्यों रे? ए. हाँ चलेगा. वो तेरा मर्जी है. Stratosphere. Sir, can I mix history and geography in one? Why not? Yeah, but how do you? एक काम करना डिवीजन कर लेना सेपरेट कर ले. सर बट हिस्ट्री का ज्यादा नहीं होता तो उसका अलग से डिवीजन करके मैम बस 2-3 प्रोजेक्ट्स ठीक फिर देने सब डायग्राम बंडल्स एंड बंडल्स ना चौपान इतना सारा नोट्स. I'll show you the videos of Hydrosphere. Yes. I mean, the first person who went around the space. Who was he? Neil Armstrong. वो तो बहुत लेट आया. Russian was the first person. ये ड्रॉ कर दो तो जल्दी कर. हाँ. मैं भी उसका नाम भूल गया. थोड़ा टाइम नहीं करूँगा. Thank you. कब तक दोगे? 4 है टोटल. 2 एब्सेंट है पर. चले. नहीं ना ऑनलाइन नहीं. Already, I don't speak. I have taught also. Taught? That was the funniest part of my teaching career. Marathi madam na, that's the absent. Congrats. Correct. पहले फेल होता था. Marathi. हाँ. 25 पास हो गया. And let us understand what is atmosphere. Just few minutes here. And why both are sitting like a boy and a girl. There are those who better. क्या हो गया? सर ऐसे पढ़ा है. अरे बाबा इतना बड़ा क्लासरूम है इधर बैठ सकते हैं इधर गर्मी होती है मिलती है कहाँ कभी मिली मुझे तो कभी मिली थी और भी कुछ है लाइफ में एटमॉस्फेयर guys don't try to understand you will keep laughing on I'm talking geography pure why do you mix all that stuff here why okay. How do I define atmosphere? बच्चे बोला खुद पूछ रहे तो मेरे से क्यों बोल रहे? It is an envelope of air which surrounds the earth. He'll say hot air, cold air, nothing like that. So we divide the atmosphere. We divide the atmosphere on the basis of the meters. The minimum or the closest to the Earth's surface is troposphere. Correct? I am not mentioned. Listen. Then we have stratosphere. Then we have meso or mesosphere. Then we have ionosphere.
आयोन्स अभी हमारा जो सैटेलाइट रेडियो टेलीविजन का इधर है, इसके आगे जाएगा एक्सोस्फीयर। किसी ने बोला इसके आगे जाएगा, इसके आगे जाएगा, एक्सोस्फीयर के बाद स्पेस स्टार्ट हो। करेक्ट। हाँ, the UD Gagarin, the first person from Russia who went round the space and come. ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो अभी भी कुछ हाँ, फर्स्ट पर्सन, उसका वीडियो भी है। He went and he landed somewhere in the potato farms of Russia. That's why even today Russia has a deeper, impact of space. Next comes America, next comes China, and next comes our own country. Right? So what are we going to understand? Look here, not only the depth, but we have to understand every sphere of the atmosphere has its own importance. Importance for what? I mean, now I can say aeroplanes here. Now something here. Many things here. Nothing here and nothing there. Why nothing here and nothing there? Because the height and the elevation is there where we have to understand its importance. I mean, the word ion is there, means transmitting waves. Which waves? Normally this radio waves. You know what is a satellite picture at least? Whatever you and me see the pictures, it is not directly coming to you and me, but it first signals goes to the space. From there it converts powerful. And then, so whenever you see a live match, any live match, signals. Any live match which is happening in London, any live match which is happening in US, but you are seeing sitting at your home. That's satellite communication. So now the war has become so sophisticated. I think China has invented and India has also done. Within 30 seconds, we have a missile which can go and hit an opposite person's satellite. Agar satellite ko hi maar diya, then that country has to go. Jazzer satellite. So the wars have become so sophisticated. Now they have started hitting even the satellites which are fixed. अगर एक बार अभी इंडियन सैटेलाइट्स को मार दिया, उसलिए इंडियन सैटेलाइट किधर है, कौन सा टाइप पे, कौन सा ऑर्बिट में, except India, nobody will come to. So that is what our atmosphere. So there are more than 100 satellites. वो तो बोलता है कि न्यूक्लियर वेस्ट जैसा इधर दिखता है ना, उधर एरो वेस्ट बहुत है, कचरा फ्लोटिंग। वो तो सिर्फ अमेरिका और रशिया हर 2-3 साल में वो कलेक्शन ऑफ कचरा उधर भी करते हैं। Because they keep floating. और हमारा जो चंद्रयान 2 ना या 3 जो लैंड हुआ वो भी एक कचरा ही पड़ा है. It is full frozen. Because every 14 days the temperature of the moon becomes 214 degree centigrade minus में जाता है. So that the Chandrayaan was dead like a, अब उसको लाएगा कौन? It is left there. So we understood. So we are going to study like this. So first we are going to write introduction. You write down. पहले ड्राइंग करो, पहले ड्राइंग करो, उसने कर भी दिया रे, हाँ वेरी गुड। और मीटर्स रहेगा तो देखो 0 meters आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा, and I'll try to put that electronically also. Electronically means Yes. what should I? 50 kilometer, 90 kilometer, 400. Oh my, then it is okay. Okay. Why should I fiddle with this unwanted system? Get through. Just get through. इधर बैठा है, बुक उधर रखा है, ये क्या सिस्टम है? Look at him. Responsible. नहीं आपने बोला इसलिए। हाँ तो at least he listens to me. I like you guys. Right below. The term atmosphere refers to. Oh my God, क्या सुन रहा है? The term atmosphere refers to envelope of air surrounding the earth. Envelope of air, look how I'm pronouncing envelope of air. Make English of funny guy. Today only I'm laughing with you guys.
3 दिन से मेरा बीपी का ऐसा इश्यूज चल रहा है। मेरे हाथ में तो अरे I never in my life it has crossed 220, 220 to 120 highest. वो percentage है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँ, मम्मी का डॉक्टर चुरा के नहीं कराऊँ। ये तब तो आए प्रभु मुझे देखने का क्या आप कुछ भी बोल डॉक्टर एडमिट करेंगे मैंने किसको तुझे मैं तो ऑलरेडी इधर है envelope of air surrounding the earth. Next, it includes अभी लागू start continuation की next line. next line. It includes यहाँ से कर troposphere, stratosphere, mesosphere. Oh my God, satellite ionosphere में डाला, exosphere में डाला. Aircraft को मस्ती के तो I hope so. ऐसे तो होता है even though this happened because it's just a you will make articles समझ गए तुम्हारा मतलब क्या है he's in Kuwait सच है तो करता हूँ ये मेरी मम्मी है हमारा माता देश है उत्तर देश तो किधर क्या करता है मम्मी ने मुझे डिवोर्स किया मतलब पापा को बोला तो इंग्लिश मम्मी की तरफ लेके ये मैंने बोला नहीं इंग्लिश मम्मी के साथ बोले वही लव ना just not like it. Do you remember? It's like I go there and I try to make fun of certain English. Then sorry, I understand. Oh, we understand. Oh, really? I understand all of them. Give them respect and try to respect their cultures. Automatically they will. इधर से जाने के बाद है ना माय इंडिया माय मुंबई के लोग अभी मुझे लगे बोले ना फ्रॉम इंडिया मतलब व्हाट मुंबई मतलब एक नो आई हर्ड यू फ्रॉम इंडिया नो नो मदर इज हियर इसका अर्थ क्या है व्हाट इज दैट दिस इज माय प्लेस एंड दैट इंडिया and then you don't know no born and brought up here and you contested him so that you are too funny but you are very seriously asking me रोड ही पे हो गया मतलब इसको लगेगा शादी अपनी समझ के अभी भी इंटरव्यू चल and then what are you from the advertisement your company then how much you expect sir what do you think sir he means me British sir I'll come what do you think the evidence is but one thing I make them to laugh they very sir the fact we are and never say my motherland is say motherland is why so your motherland my motherland same no problem and no British passport problem sir government is not taking care of ऐसा बात क्या अरे वो भी तो काट नहीं देता फिर जाओ घंटा लगता वो काम जाओगे पर तू क्या इतना सीरियस है अरे आज के लोग ना कर देते हैं
दोनों का ICSE के काबिल फंड है, बड़ा क्लियर हो, है ना? वरना $450 साल में हाई है, और उल्टी है, हाँ, और ग्रेट, famous superstar, like rapper, and एक लड़की भी है मेरे से, उसका तो भाई हाथ सन, तुमसे मिला नहीं मतलब, कॉन्ट्रे, हाँ मैं पता कर मैं रोजी रोटी का नहीं मालूम आता, चेक चपली नपली भी उधर आता है, अरे पर मैं हॉलीवुड का साइन किधर है? वो क्या है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, मैं उधर रहो, हाँ बट उधर रहो, तब तो हमारा इसी का पहचान है, अच्छा उधर रहता है, हाँ आपका तो गाने गाने का है बट कैसे नहीं कैसे तो उधर भी लगते, अरे तू बोलती है ना अब भी मैं जाऊँ, बट एक $100 बोल कितना दासी है, ठीक है फोन रख, नेक्टर तो बोल ही नहीं करेगी, फिर ने देखा आई रिमेंबर द फर्स्ट स्नोफॉल आई वाज देयर ना, $100 तो फिर मैंने बोला ठीक है ये है इसको तो बात है, it's what I do, there's no nothing, I don't think कैसे कर रहा है, कोई करा तो मर जाएगी, how much is the temperature, my oh my god my oh my god नहीं अगर मैं चली जाए तो तो बिल्कुल नहीं बचा ना, तू बची नहीं, कुछ भी फालतू कुछ नहीं, चल that is right composition in between जगह भी पढ़ना जरूरी है, अभी देखो composition मतलब क्या है, इसलिए मतलब क्या है, we are going to study every sphere. First, what is it is comprised of? Water and air. कुछ भी. Humid. जो भी है. Second, its importance. Understanding what I am saying? So now we'll start from troposphere. Wait. Then we will go to stratosphere and mesosphere. Normally, these two spheres are very important. Now there are certain books you might have seen some marking like this. Tropopause. Yes, sir. Mesopause. Mesopause or stratopause. एक बच्चा बोला सर आपने बोला 4 लेयर इधर तो 6 लेयर है, हाँ समझ गए भाई साहब खुद वो बहुत जरूरी था, वो उन लोग समझ जाएंगे जिनको है अच्छा नॉलेजफुल है ना, मतलब वर्ड पॉज उसको मत समझा, उसको वो सब ज्यादा समझना, what is the word pause means, it is the layer between these two. Tropopause मतलब the layer between stratosphere and troposphere. ऐसे नहीं कि आप लोग ने लाइन खींच दिया तो हर स्फीयर वो लाइन के ऊपर है आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं. These are all air only. But just for your understanding, we are saying कि यहाँ से इतना किलोमीटर तक एक स्फीयर है. From there it is one more sphere. From there it is one more. Is it a cut to cut? नहीं troposphere नहीं आने का मैं अरे ऐसा थोड़ी है. उसीलिए उन लोग ने वो ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज एंड मेसोपॉज एंड एक्सोसॉस है ही नहीं, उसके ऊपर तो पूरा उसके ऊपर तो पूरा क्या है, स्पेस है. Then I now write down the word composition and write the notes. Why? Atmosphere is mainly comprised of mixture of several gases. Atmosphere is mainly comprised of mixture of several gases. Second point. Nitrogen. Bracket how much percent? 78%. Nitrogen की जगह N2 लिख सकते हैं. नहीं ना ब्रैकेट में N2 क्यों लिख रहा है? मुझे क्या लगता है आप ज्योग्राफी टीचर आप साइंस में मेरे जैसे हाँ ऑक्सीजन
21%, कितना हो गया 99, है ना? 1% अदर गैसेस और इनर्ट गैसेस। आप लोगों को साइंस में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडल पीरियोडिक टेबल है? Yes. टेल मी व्हाट आर ग्रुप 9A एलिमेंट्स? 9 elements are all. 9 elements नहीं, group 9A elements. 9A elements are all inert gases. Tell me any one. Argon, फिर neon, और रेडॉन, germanium. Germanium aldehyde में आएगा, sorry. क्रिप्टॉन, वही क्रिप्टॉन से अपना सुपरमैन बना। हाँ, वही krypton से इफेक्टिव। तब फाइंडे आगे से अपने को से उसने फाड़ा था बाहर को तो yeah, but he comes back ना फिर while there's a tight way open करते तो फिर वो उसमें बिजली डाल देते थे तो अरे इंडिया में बुला यार वो हमने शाम तो बड़े था शक्तिमान। को बुला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट besides these it also includes carbon dioxide, कार्बन को मार दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीलियम, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, हीलियम, हाइड्रोजन, argon, etc. Next and the last point. Presence of water vapor, it will explain, is primarily responsible for presence of water vapor is primarily responsible for different forms of precipitation. Now look at shall I switch off this AC for some time? और Focus. Next. responsible for Precipitation. It is written here. And then wait, I'll explain. Okay, what are the 4 forms of precipitation? First of all, what is precipitation? A word in atmosphere. Falling down of molecules of water in is different called forms. different forms is precipitation. Correct. Then how many forms of precipitation do we have? 4. Very good. What is it? Snow, ice, Snow, hail, ice, ice creams, cones and butterflies. snow, hail, Which is the most common form of precipitation? rain. क्या बोला? Rain. अच्छा, now we got some. Rainfall, snowfall, है ना? Ice fall. No fall. It is hail and hailstones. Here लिख लो notebook में. Hailstones मतलब ice. है. तो तो लिख तो सही है, हम बोल रहे फिर बाकी क्या राय की तरह गिरता है क्या? प्रेसिपिटेशन लिखना और ये 4 फॉर्म्स लिख लेना. देखो, besides rainfall that we get, you might have heard or seen snowfall as well. yes. But how does hail and hailstones? Hail, as he said, it's minute, small, cubes of ice. Hailstones are much bigger, which is very dangerous. They say when it falls from the atmosphere towards the Earth's surface, all are in the form of water only. फिर क्या ऊपर से आइस का गोला थोड़ी बन के नीचे आता है. Then when it nears to the ground, मतलब close to the ground, मतलब इतना भी नहीं कि नीचे आते तुरंत चेंज हो जाएगा.
Due to the surface temperature, it gets snowfall, it becomes hail, it becomes hailstones. Now, what is this water vapor? Somebody told me, sir, it is droplets of water. No. Okay. These are molecules of water freely moving in air. So, what is droplet? Not visible to naked eye. What does droplets mean? Droplets of water means mixture of many molecules of water, but in less quantity. Good. I'm impressed. Correct. Eh? Now, So we always believe that rainfall, the most common form of precipitation. One step ahead, snowfall. Not me, my dad told me Mumbai had seen hail also. And children will take a small beaker of glass and keep collecting. Not now, long time before. And then hailstones are mainly restricted to those places which are severely cold. So now we say water vapor का काम नहीं. In fact, in India also. What is it? अरे अब उनको द्रास और कारगिल में चल. बस भी knowledge है. एक गलती से knowledge आया. और कारगिल किधर है भाई? हाँ वो जहाँ पे war हुआ था ना. किसका? कारगिल हुआ. हाँ, very good. Now मैं भूल गया था. So all this four you understood? Let us go ahead and finish this para. Water vapor. Water vapor. कुछ heading है. नहीं वही है, composition ही चल रहा है. Water vapor is added to the atmosphere through the process of evaporation. Evaporation. Sir, so it is just the recap of the basics of 7th and 8th. 7th में क्या है? सिर्फ ऊपर पर से मैं तो अभी इन डेप्थ में जा रहा हूँ. तूने 2 मीटर बोला ना, मैं तो 10 मीटर लेके जाऊंगा. तो मुझे चोट क्या है? Okay. Atmosphere through the process of evaporation. बस खत्म. Now put the next heading, functions. ये पोलर वगैरह है, डस्ट स्टॉर्म्स हो सब ठीक है. Functions of atmosphere. Functions, point number 1. Suspended particles. आराम से. Half will be up and half will be down. Yes. Suspended particles along with gases in the atmosphere remains in contact with land and water. Next. This contact next point. This contact helps in exchange of gases. Yeah, understand and write, right? If you don't understand. Between exchange of gases between air, land, and water. Next. ये सब उसका फंक्शन, ठीक है? Presence of nitrogen and oxygen. I have to show you a nice video. Presence of oxygen, nitrogen and oxygen are absorbed by soil. Presence. Nitrogen और oxygen atmosphere में ही है ना? Are absorbed by soil
थ्रू, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? वो मिल्क से कर्ड बनाने वाला है। हाँ मैं भी भूल गया, राइजोबियम बैक्टीरिया, एक्चुअली ओनली फॉर इसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए, राइजोबियम बैक्टीरिया absorbed by the soil. थ्रू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड अदर microorganisms. In laboratory, you have done any experiments in your schools? Yes. During, अभी तो गवर्नमेंट ने सब बंद कर दिया ना. Chemistry. First lab experiment was pricking our fingers and taking them pill. Oh, good thing. फिर onion peel, फिर elephant बोलता, sorry. Direct pathogen में उंगली डाली. लड़कियां तो ऐसे चिल्ला रही हैं, अरे पूरा खून तो नहीं निकलना. अच्छा मतलब ये क्या है? मैं बोले ये तो वो है, क्या है? अरे मैं भूल गया क्या है यार, 3 लेंस के साथ क्या है? माइक्रोस्कोप. When 12th standard students they understand my explanation, सर सही है, सर सही है, तुम बच गए, सही है क्या सही? फिर सर बीच में वर्ड बोलने के बाद मजा आता है. चल, now you read all these points and tell me which one you want me to explain. None of the above. इतना अच्छा समझ गया, बट ऐसे कैसे? मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया. अच्छा और भी छोटा पढ़ लीजिए. Sun and sun's energy. Next and the last one. Sun And its energy. Helps atmosphere. ये वर्ड मुझे बहुत पसंद है. Helps the atmosphere to remain in the dynamic state. Now, how do you explain this line? What is the meaning of the word dynamic? बोलो. लिख रहे हैं कि same state. उल्टा opposite है. Have you heard a word called ever changing? Yes. Who is? No. हैं? अभी तो क्या is? पर अभी तो सुना. तेरे लाइफ में कोई डायनामिक पर्सन है? अर्थ बताओ बता दे. हाँ बता बता. किसी ने मम्मी का नाम लिया, किसी ने पापा का नाम लिया, और गलती ने किसी टीचर का नाम लिया. वो डायनामिक है, इतना तो जान लेती है मैं. फिर किसी ने बोला हमारे मैथ सर हैं, फॉर्मूला क्या लगा उसको कुछ आता भी नहीं. बायोलॉजी टीचर, हम क्यों सर वो है ना, वो सब पढ़ाती है बस. क्या सब सर वो सब पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है सर वो सर जिंदगी. मैं बोला फिर उसमें डायनामिक क्या होगा सर? डाउट्स में किसको पूछूंगी, कौन सा डाउट है? सर अच्छे अच्छे डाउट्स आते हैं, तो मेरे से पूछना, हाँ आता है सर, बट वो डायनामिक ज्यादा है. एंड मैंने अच्छा सर आपको when I used to work in that college, I held a lecture using a doctors. मेरा friend है, and वो बड़ा टीम के साथ लिख रहा है. I think 4 या 6 जेंट्स डॉक्टर्स आए थे, 2-3 लेडीज डॉक्टर्स आए थे. तो जो जेंट्स डॉक्टर थे वो लड़कियों को लेक्चर ले रहे थे, और लेडीज डॉक्टर्स लड़कियों को. और मैं और मेरा जो बॉस था ना स्टूडियो, हमारे ऐसे बैठे थे स्टाफ में. मेरा दोस्त है, अरे ये स्टिल ना 12 स्टूडेंट्स ऐसे डाउट्स पूछ रहे हैं. मैंने चले, मैं आके पूछा, अरे तू आ तो सही. तो इधर वो स्क्रीन मॉनिटर लगा है, वो प्रोजेक्टर चल रहा है. I'm saying my remember 80 का स्ट्रेंथ था, 80 प्लस था. और जैसे मैं अंदर घुसा ना, और मैंने क्या कॉर्नर में बैठ के डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ट्रांसलेशन मतलब एक लड़का एक खाली सब देख रहा है. हाँ यस बोलिए. फिर हो गया, आई थिंक 3 घंटे का था. फिर थोड़ा देर में स्टाफ रूम में बैठा था, और फिर कुछ लड़कियां वहां से, सर हु ऑर्गेनाइज दिस लेक्चर सर? अभी लोग कैसे पढ़े लिखे ना, नहीं नहीं आई हर्ड यू मला. हाँ ही वाज माय डॉक्टर. फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक.
Sir, when is the next lecture? Sir, good lecture, sir. You should, sir. ठीक है इतना पूछ लिया फिर नेक्स्ट मेरा लेक्चर था इकोनॉमिक्स गया था अंदर और सर वेरी गुड वेरी गुड फिर मैंने थोड़ा देर एक्सप्लेन किया आई थिंक डिमांड है कुछ तो एक्सप्लेन करता है आई डोंट रिमेम्बर फिर मैंने पूछा अरे आई आल्सो टेक सम गुड लेक्चर्स यू नेवर हैव द डाउट इन माय लेक्चर एक लड़का सर वो लाइफ के लिए जरूर था ना सर हाँ सर ऑल द डाउट्स आर क्लियर बहुत अलग स्टू है ना सच्ची पॉपुलर हो गई फिर जब भी मैं अकेले रह गया ना सर मैंने सर देखते हैं जब इकोनॉमिक्स फॉर यू आल्सो आई थिंक सीबीएसई का रूल्स है नहीं क्या ICSE हाँ मतलब अच्छा तो आप लोग को नहीं हुआ अभी तक इट इज अ मस्ट इन द स्कूल बच्चों को होता है हैं कितने छोटा डायपर वाला नहीं 9th और 10th को भी होता है हाँ 9 कोई जरूरी है उल्टा ऐसा कैसे नहीं हुआ अब पता बोलते नहीं तो फिर because that is you are in the transition stage है ना तो तभी बच्चों को मतलब वो प्रॉपर्ली गाइड करो अब हमने बोला तो फिर हमको कुछ अजीब नहीं इसमें क्या अजीब है जाओ प्रिंसिपल जाके पूछने गए कब लेक्चर रख लोगों ने मास्टर विषय पे हमको ये चाहिए ऐसा मत बोलो ना इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स एंड गवर्नमेंट अभी कंपलसरी करने बोला है बताओ उनको अभी तू जाके तेरा पापा साहब मम्मी से थोड़ी पूछ सकता मैं नया नंबर बना लूंगा व्हाट्सएप पर दे डायरेक्टली जाने का 2 दिन मैडम आए तो लेडी है क्या लेडीज हाँ तो अच्छा है ना और जाना तो लेडी प्लस हाँ तो किसी एक से जाके बोलना अरे एक है कि भाई इससे बोलते हैं ना इनफैक्ट मेरा तो 2-3 डॉक्टर्स अभी भी पहचाने मतलब बोलेंगे अरे सर कब चाहिए अभी तो बैठ रहे and government of India advises all this to be taught when you are in that 13-14 age group हमको भी होता है when we were in our school हाँ क्या हो जाता है ना there are certain concepts अरे हमको अभी मालूम पड़ा जैसे मुझे 12th तक मुझे ठीक से ये सब आइडिया नहीं था हाँ क्योंकि आई वाज नॉट टू पढ़ा तो लड़कियां छेड़ती थी मैं देखती आता है नॉलेज है तेरे से नहीं सीखना है मुझे चल ना पढ़ते नहीं से स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स चलिए एक लेक्चर में इतना कुछ हो गया यार है ना और बीच में हम लोग इतना सारा जीके जी के बात कर रहे हैं नहीं you are the every right to ask your principal or HOD and they must arrange it you tell your पापा से कैसे हाँ अरे वहाँ हमारे यहाँ पे कुछ सीधा कुछ लोगों को चेक करूँगा क्या पता उसको What is it that was? कौन सा सारे लड़कियां आजकल मोबाइल पर पिक्चर लेकर आती है पूछती है और सर बेचारा एक्सप्लेन भी करता है हाँ अरे इसे समझने के लिए क्या होता है मैंने बोला करके और सर ने बस कोशिश करते हैं सर क्या हो गया तुझे शर्म नहीं आता कहीं इन माई एज ना इसमें क्या है तो पूछते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है क्या अरे एक्सप्लेन करता हूँ ना अभी ये भाई साहब ज्ञान बांट रहा है अरे मुझे भी तो बता रहे हैं चलो फर्स्ट हेडिंग राइट प्रॉपर अभी हम लोग राइटिंग कम रीडिंग ओके एंड देन विल मार्क माय टू बडीज आर टायर्ड टू राइट है ना ठीक है यही का बात मैंने सुनी और भी कुछ दिन में मार्क आप लोग करें मेरे बीच में यही चल रहा है 7 की कहां से देखो नहीं 7:30 ये रखा तो क्या हुआ सभी सभी क्या कर मेरे सब कुछ कितने माइक चल रहा है साइड है ठीक है जरूर द चैनल लिखना बिकॉज़ ऑटिज्म मींस तो नया है एंड मैं बस पापा को चाहिए कौन से ये कौन है जो भी है क्या है मैं सब कुछ पर वो बुक पे नहीं वो अटेंडेंस का नाम है आप ये कैसे चलो राइट अप नॉट राइट अप रीड अप we are taking one sphere and we will try to see
देखो, one thing when you are writing the answer in the exams, now first you have to understand the extent. We I said troposphere from 0 kilometer to how much? 18. क्या हो गया? Oh, extra है. अभी 3 benchmark. 0 to 18 kilometer. That is what he is going to read first. Come on. Extent. The troposphere is the lowermost and densest layer. छोटी मीटर करो तो मुझसे 69. कितना है? नहीं कर लेना वो अरे वो क्या इधर लो. हाँ ठीक है, ऐसे कभी कभी मुझे भी होता. सर आप भी सुबह से शाम तक लेक्चर लेता हूँ. हाँ ऐसा बोलते सर. क्या है ऐसे सुबह से शाम तक लेक्चर्स लेता हूँ. व्हाट डू यू थिंक? चलो भाई, यू रीड इट. Underline that word, lowermost and the densest layer. Now look at this diagram. Do you accept this is the lowermost layer? Yes. Sure. Yes. But how it is No. the densest layer? Yes. Yes. But why? High amount of nitrogen or oxygen. Very good. All other layers are over it. Second, it has all the gases which you and me. अभी इसका जो density है और इसका density इसका तो zero रहेगा. Just close to the space. So since it is the lowermost layer and it has all the gases present in it. अभी मालूम पड़ा mesosphere और stratosphere में गैस रहेगा तो हमको आते आते दिन निकल जाएगा. Especially oxygen. Understood? So that is why it is densest. Go ahead. Next. Its height varies from 8 kilometers at the equator, 18 kilometers at the equator to 8 kilometers at the pole. हाँ, poles में क्यों कम है? Poles में क्यों कम है? No, the earth shape. अभी इधर से explain कर. अभी this हाँ. From here, if I want to reach the stratosphere, longer distance. From here, shorter distance, 8 kilometer, and this is 18 kilometer. This is So why equal. don't we launch rockets from the poles? Directly पोल से फिर वो रॉकेट उठेगा भी क्या? आग लगाते बुझ जाएगा. He asked a very genuine question. There's a place called French Guyana. It is very close to the equator, and from equator to reach the space is the safest and easiest because the altitude it has to climb is safe because rocket has to defy the gravitational pull. उसलिए वो इतना फास्ट निकलता है. There was a joke. हाँ वरना तो पोल्स में जाके कहाँ से जनरेट करेगा? कंबशन ही होगा नहीं. And there was a joke between this. मैं अभी लड़के को बोल सकता हूँ. एक बार रॉकेट एरोप्लेन बात कर रहा था. बार एरोप्लेन को एरोप्लेन ने रॉकेट का तारीफ करा था. तेरा क्या है भाई लाइफ? दफा टूटता है. हमारा क्या है? इधर उन्होंने खुद देखा. तो बैठना है क्यों परेशान कर रहा है? अरे तेरा क्या है भाई लाइफ? तो बस ऐसा होता है. तो रॉकेट बहुत तंग आता है. तुझे मालूम है क्या? जब मेरे पिछवाड़े में आग लग मैं ऐसे उड़ता रहता हूँ. तेरे भी पिछवाड़े में आग. You drag it. Last में जल्दी बोल देना. So whenever we talk about the aeroplane, we have to see the atmosphere here. So as he asked me the rocket, I remember that very well information. So let's go. Next, characteristics. Okay, I'm reading. Only underline. 75% of the atmosphere is strong. Underline 75%. Concentration decreases. Now let me show here. Of the entire phase of atmosphere for me and you, which is mainly responsible this. So what we are saying ki whatever atmosphere's total content, 75% is here. That is why you and me are alive. For example, I say 75% is there in the exosphere. आप जा जाके rocket पकड़ के उधर जाके जिंदा नहीं रह सकते. That is why it is densest also. Okay. Then the next one.
बोल दे बोल दे. How are the atmospheric layers made? देखो very simple. Now if I tell you, you are traveling in a rocket, not in an aeroplane, is it? But do you really find ये सब ऐसा है क्या? Then why I'm showing you like this? In order to make you understand the whole atmosphere is like this, I'm showing you like this. But in reality, there is no line or there is no troposphere. But we have made it in such a way कि यहाँ से यहाँ तक आपको ये climatic condition, ये gases मिलेंगे. इसके ऊपर गया, then different climatic conditions and different gases. And every layer of the atmosphere has its own characteristics. That is why they have named. You know, those scientists who discovered the stars and whatever satellites, the satellite is named after the scientist's name only. You know that? You don't know. So that is how, these are not scientists or geographers, but based on its content, or you remember, what did I explain? Composition, it has been named. But literally there is nothing like this. And I cannot draw a line की troposphere exactly there ही है. It can be higher or it can be lower. Simple. Then mark the characteristic, second one. ये notebook में लिखो ना बात. This decreases in temperature is known as underline. Normal lapse of rate. Sorry. Normal lapse of rate. वो underline करो. अभी notebook में लिखो troposphere. एक word लिखना ज़्यादा नहीं. First point. Lowermost and densest. Lowermost and densest. Okay. Second, extent 18 to 8 kilometers. 18 to 8 kilometers. 8 kilometers के बाजू में ब्रैकेट में लिखो poles. Oh my dear, what a beautiful handwriting it is. That is इसका फिर भी थोड़ा सा कम गंदा है. भाई ये किलोमीटर्स को इतना अच्छे से क्यों लिखा है? अलग कर देखो अल्फाबेट्स का अलग कर. बाकी तो आप लोग समझ ही पाओ. क्या होता है उसमें? हैंडराइटिंग इतना खराब क्यों लिख रहा है? Next point. 75% of atmosphere. कितना अच्छा है ना पॉइंट्स छोटा छोटा है. Third point. Next point. Fourth point. Whatever. Regular decrease in temperature with height. मतलब यहाँ से जब आप ऊपर जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा और हाइट भी डिक्रीज होगा. Next known as lapse of air. Lapse of time. Lapse of time. Normal lapse rate. In the break, as anyone gets to see through the college, they came to know the IPs for our standards. They called me for an interview. Principal as a lookup. And they were happy to take me, but मैंने जो salary बोला ना वो ठीक है. So इतना तो मेरा भी नहीं है. मैंने बोला already मैं उतना ही charge करता हूँ. So फिर भी आप part time के लिए आएंगे. बोला तुम्हारा family इतना घटिया है. They call me from 12:30 and up till 6:30. हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. मतलब तो पेमेंट भी तो पे एडजस्ट करिए. सर आप करेंगे मैंने सर इंटरव्यू लेने के लिए 2 लेडीज का और इन्फ्लुएंस होता है. ऐसा फारा था लोग. लेकिन सभी एक्टर होते हैं.